हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज येट अनदर एपिसोड ऑफ ट्रिक फ्रेंड्स। एंड आप सबको पता होगा कराची वाला एडिशन खत्म हो गया पीएसएल का, एंड पीएसएल इज नाउ कमिंग टू लाहौर। वेल टेक्निकली आ गया, कल मैच हो गया पेशावर का, लेकिन बिफोर इट एक्चुअली किक्स ऑफ विद लाहौर का मैच, वी बिलीव दैट इट्स नेसेसरी कि हम थोड़े से प्लेयर्स पे एनालिसिस करें एंड व्हाई दे आर द वंस टू वॉच एंड द वंस हु डिसअपॉइंटेड एंड द वंस जिनके साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस है फॉर एक्चुअली डूइंग समथिंग बेटर. So beginning with the fact that Mohammad Hafiz has retired from international cricket and Pakistan ka number two ka jo two down ka spot hai, that's open for uh, it's up for grabs, and everyone expected Haider Ali to be the one jo is pe karega succeed. But so far his performance in PSL has been quite ordinary, nothing as such impressive, or his key decision making has left some of us baffled. So, beginning with Umar Farooq Chima, do you see Haider Ali ending up as the two down for Pakistan, or do you think उसका लाहौर में आकर performance बेहतर होगी यानी कि? What do you think ज़ल्मी में भी क्या मसला है? ज़ल्मी aren't clicking them. उनका बैटिंग कोलैप्स तकरीबन हर मैच में होता है, एंड अगर तुम कल भी देखो दे ट्राइड न्यू प्लेयर्स न्यू ऑर्डर बट स्टिल दे फेल्ड. उनको लिविंगस्टन भी आया, उन्होंने हैदर को ओपन कराया, कुछ नहीं चल रहा. सो पहले आप हैदर पे बात अच्छा बताएं अपने जल्मी। बारे में, और फिर ज़ल्मी के ऊपर हम बातें. जी, हाँ हाँ, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही, पहले नहीं आ रही थी. अच्छा, तो जल्मी का ये है कि सबसे पहले आपने कहा हैदर पे बात कर लें। हैदर अली पिछले 2-3 साल से हमारी भी और सिलेक्टर्स की भी नज़र में है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने पहले सीजन के बाद पीएसएल के और उसके बाद भी इनिशियली जल्मी में आके भी जब उसने अप दी ऑर्डर खेला, उसके बाद से इम्प्रेस करना हमें छोड़ दिया। फिर अब वो उसका बिल्कुल वही माइंडसेट है जिससे हम एज ए नेशन वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट, के सारे मिल के टीम में ऐसे करते हैं कि या तो आके रोकते हैं या आके लंबी शॉट मारते हैं। तो वो जो बीच वाला माइंडसेट है जिसके अंदर आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, वो हमें हैदर अली की तरफ से अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा, विच मेक्स अस थिंक कि क्या हम क्रिकेट में पीछे तो नहीं जा रहे, हम 5-7 साल पीछे तो नहीं जा रहे जहाँ पे यही होता था कि बिल्कुल या तो टुक टुक हो रही होती थी या छक्के चौके पड़े होते, तो स्ट्राइक रोटेशन जो रिजवान और बाबर ने बड़ी जबरदस्त शुरू की थी, तो हम उससे कहीं डिविएट ना कर जाए। और एज फार एज पेशावर जल्मी इज कंसर्न, तो एक तो वो बहुत ओवरली डिपेंडेंट है अपने ओपनर्स के ऊपर, और उनके ओपनर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। स्पेशली कामरान अकमल की बात करूं, आप पिछले सारे सीजन में देखें कि वो एक इस तरह का कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है कि जो इनको ऊपर लेके गया। अब अगर कामरान अकमल परफॉर्म नहीं करता, तो उसके बाद इनको चाहिए कि फिर इनके लोअर मिडिल ऑर्डर में से, क्योंकि कामरान अकमल के पास फायर पावर काफी है, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर से कोई बंदा इस तरह का हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर फिर भी स्टेबलाइज करके दे रहा है इनको, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो आके फायर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से स्टेबलाइज तो हुई होती है सिचुएशन, लेकिन आखिरी के ओवर कैपिटलाइज नहीं हो पाते। I think that pretty much sums up Peshawar, especially considering कि एंड में आकर उसी को खेलना पड़ता है बेन कटिंग को, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उसका भी आज से रन नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर दैट वन मैच जिसमें उसने बहुत स्कोर किया था. वेल इट वाज फॉर अ लॉस्ट कॉज, लेकिन आई पर्सनली विश के अच्छा हो जाए इनका सिचुएशन. एंड हुसैन तलत से बात की जाए, आई जनरली थॉट दैट इस्लामाबाद शुड हैव रिटेन्ड हिम, because Islamabad does not have a stable batsman out there apart from Shadab Khan who can rotate the strike and be handy when the conditions are not so favorable. इससे किसी को हिस्टोरिक विन ऑफ लाहौर कलंदर्स याद आ गई होगी, जिसमें जमान खान डिफेंडेड 12 odd runs in the last over. So being a fellow कलंदर फैन जोहा, जमान खान, दिलबर हुसैन, दानियाल, हारिस रऊफ, शाहीन, Lahore Qalandar has a habit of actually producing fast bowlers, unlike the rest. So what do you think about Zaman Khan? मतलब उसका मैं एक्शन देखा, मैं उसको सबसे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग में देखा, तो मैंने कहा ये तो अपना मलंगा निकल आया है. तो what is your take on Zaman Khan? Yeah, I really like him. मतलब he's good on the field as well. मतलब उसकी presence, it's very refreshing, I think.
But abhi he's still young. It's just his first PSL. Pakistan में बहुत आदत होती है first PSL के बाद ही you either disregard the player or you hype them up. और fast bowlers का ये होता है. I remember when Shaheen came, either people hated him or people loved him. ठीक है? There was once I think Shaheen को 60 पड़ा था odd in one of his spells, and people were like, he's the worst fast bowler ever. इसको तो खिला ही क्यों रहे हैं? How can a fast bowler go for 60? And what is this? Why is he so hyped? And then I think in that same leg उसको कोई बहुत उसने पता नहीं 3 wickets ले ली थी in that same leg, and then people were like, this is the best bowler. So I feel like fast bowlers ka people keep changing views with every match. So I think that is a little scary thing to do, especially because they're still, even Shaheen is just 21, but Zaman is right now 20, and it's his like uska to KPL ke baad this is his first major league jab log usko dekh rahe hain, so I feel like we shouldn't be too quick to judge him. I like him, but I know a lot of people are like, isko le jao World Cup. I'm not in favor of that. I feel like he still needs to be groomed. I'm glad that we have this unending pool of fast bowlers. अब तो बहुत ज़्यादा नसीम है, धानी है, then Zaman, and then we have a long list of bowlers, but we need to be smart with them, because I don't want to name drop, but we don't want more armies. I am name dropping. We don't want more armies जिनको hype कर देते हैं and then they don't live up to the hype and then they get bitter. And I don't want that to happen to our players, so I'm not hyping them up too much abhi. Slowly, just taking it slowly. It's actually funny because just last night Umar and I were having a phone call जिसमें हमने 20 मिनट अच्छा खासा मोहम्मद आमिर को डिस्कस किया, and you talked about how fast bowlers are either hated or loved. And if you see even these days, a name that is on everyone's tongue is Shahnawaz Dhani. People either hate him or they love him. There's no in between. Okay. And some days he fails to perform well. Like if you remember Lahore wala match, his pace dropped to 130. And even the commentators were like, why isn't he like pulling his absolute best? Why isn't he going 130, 140 clicks above? And you see Pakistan mein na abhi ek spot mere khayal se is up for grab in the T20 side. If you look, Haris Rauf, Shaheen are guaranteed starters. Okay, the question now comes at Hassan Ali. So with Hassan Ali, you have the option of Mohammad Wasim, Shahnawaz Dhani, Naseem Shah if it's a long shot. Zaman, I agree with you, is not ready for international cricket as of yet. And personally, मैं उसको लेके भी ना जाऊँ पर चले फिर मोजेस हेनरी किसी लीग में आकर कहते नाइस थ्रो और फिर हमारे बेचारे बॉय का 17 डिग्री निकल आए फिर वहाँ पर के वैसे आई एम नॉट सेइंग कि ये होता है, लेकिन व्हाई इज इट कि कभी मैंने ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश या किसी और नेशन का बॉलिंग एक्शन चेक नहीं करवाया. हमेशा इट्स आइदर पाकिस्तान और बांग्लादेश. वेल, I think I'm being better now. But coming back to the point, Mustafiz Ahmed, what's your take on this whole fiasco of fast bowlers and the selection dilemma that we have these days? Selection dilemma से पहले following up on Zaman Khan and Dhani, मेरे ख्याल से हमें एक पता नहीं हमारे फैंस को बड़ा मसला होता है उन प्लेयर्स से जो अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहे होते हैं. तो Dhani is someone who enjoys his game. And the people who don't like him are generally those जिनको होता है कि प्लेयर एंजॉय क्यों कर रहा है, प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान की सिलेक्शन के लिए क्यों नहीं खेल रहा. ठीक है. और इसी तरह जमान खान पे ही मतलब ऑब्वियसली दहानी का एंजॉय करने का तरीका और है, बट जमान खान को जितना मैंने खेलते देखा मैंने ये देखा है कि ही एंजॉयज बॉलिंग. ठीक है, उसको बॉलिंग कराने का मजा आता है. ही लव्स हिज आर्ट, व्हाटएवर हिज आर्ट इज. एंड अभी उस पे सिलेक्शन प्रेशर डाल के उससे वो मोहब्बत फास्ट बॉलिंग की जो है वो कम कराना ज्यादती होगी. आई थिंक ही शाहीन की बैकिंग है उसको, विच इज अमेजिंग, और सब कुछ है. एंड ही इज एंजॉयिंग बॉलिंग. मुझे नहीं पता फाइज आपको पता है ये नेशनल टी20 में किसके लिए खेलता है? एनी आइडिया? Zaman या Dhani? जमान. I don't remember. I don't remember watching He Zaman. plays for Northern. He does? नॉर्दर्न. Oh. ठीक है, हाँ. परफेक्ट. और नॉर्दर्न का कैप्टन कौन है? Shadab. Shadab. That's amazing, right? Just people who Shadab or Shaheen are the kind of captains who will always support you and make you love the game.
ठीक है. सो अभी के लिए आई थिंक जमान खान को एंजॉय करने तो क्रिकेट सिलेक्शन का जब टाइम आएगा आ जाएगा, दैट विल बी अप फॉर ग्रैब्स जब भी आना हो. लेकिन और वो जमान खान ने शायद कहा भी था कि 12 जब रह गए थे 6 बॉलों पे, शाहीन मेरे पास आया था और उसने कहा था जस्ट एंजॉय बॉलिंग है, मजे करो, और मजे करके 6 बॉलें निकलनी थी. तो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी नीड मोर इन आवर क्रिकेटर्स, खाली बॉलर्स नहीं बल्कि ओवरऑल क्रिकेटर्स एज वेल. ठीक है कि हर वक्त सिलेक्शन डिलेमा में रह के जब आप खेलते हो तो फिर यू स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग एट टाइम्स. हैदर अली को हमने देखा अंडर परफॉर्म करते हुए. वी लव हिम, ठीक है, वी लव द वे दैट ही प्लेज. लेकिन मेरे ख्याल से भी दिस एंटायर आइडिया ऑफ नॉट एंजॉयिंग योर गेम एंड जस्ट हैविंग दैट सिलेक्शन थिंग इन योर माइंड does lead to a lot of pressure for younger players. मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेशर होना नहीं चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि it should not overweigh on your love for the game. तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से सिर्फ सिलेक्शन के तौर पे हर प्लेयर को डिस्कस करना is a bit unfair on them. That's a very solid point. And आपने बात की उसके बारे में कि fast bowlers enjoying. So when I imagine a fast bowler, I imagine aggression, you know, Yorkers, threatening bouncers and all. Okay? So the one name that comes to my mind when I think about a fast bowler these days and a perfect utility man is Mohammad Wasim. Yeah. I'm not saying at this stage कि उसको World Cup में जाना चाहिए या नहीं. I think it's too early to call. But I think some of us over here are huge fans of Wasim. But he has a tendency of leaking runs. Even if he is bowling very good, he would end up with 40 in 4 overs, even if he gets 3 wickets. So Umar Farooq Cheema, you are a big fan of Wasim, and personally मैं उसके बालों का भी बड़ा शौकीन हूँ जब वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है. तो उमर, तुम बताओ, तुम्हें वसीम में वो he has that X factor and I personally love him. Do you see him being a part of the Pakistan cricket team future, and do you think he has what it takes to reach those limits? No, he obviously does. He has been a part of the Pakistan cricket team. I'm not sure if he's in the squad right now, but he has been a part of the Pakistan cricket team already. और मोहम्मद वसीम के पास जो आपको पता है कि एंड में आके जो फायर पावर भी है वो भी उसको बहुत एक एडवांटेज देती है. बट एक बात जो कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि द वे ही बोल्स अभी इन द फ्यूचर आई एम श्योर ही विल इम्प्रूव. उसकी बॉलिंग थोड़ी सी फ्लैट है, अगर आपने भी ये नोटिस किया हो कि उसकी बॉल लग के थोड़ी फ्लैट आती है, जो आइडियल बॉलिंग होती है बैट्समैन को, जो बहुत आइडियल लगती है मारने के लिए, जो टेक्निकली थोड़ा सा बैट्समैन साउंड होगा, शादाब खान की बात नहीं कह रहा, उनको बहुत अच्छी लगेगी इस तरह की बॉलिंग. तो ये जो इस तरह की बॉलिंग है, ये थोड़ी सी उसको अपनी गेम पे थोड़ा सा और वेरिएशन डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और बेहतर करनी पड़ेगी बॉलिंग. ये फ्लैट बॉलिंग जो है, ये यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इवन ऑन अ गुड डे ही वुड गो फॉर 40 रन्स, बिकॉज शुरू में विकेटें भी ले लेगा, जो भी एंड में मार खाने की उसके पास टेंडेंसी होगी. विद वेरिएशन ना, तो एक चीज, एक बॉलर मेरे दिमाग में आता है और वो कराची किंग्स का भुट्टो इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर. इफ किसी ने उसको देखा है गौर से, he has so much variation. वो back of the hand इतनी solid कराता है वगैरह. And last year जब वो जर्मनी में खेला था, I was a big fan of the player. और फिर वो शाहीन की टीम में खेलता था, वो जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था. I was a big fan of this player. और उसने फिर कराची किंग्स में आकर भुट्टो लुक्स भी कॉपी कर लिए. तो I am a big fan of this player and I hope कि वो अपने आप को improve करें. लेकिन coming back to उमर्स controversial opinion कि शादाब खान जैसे बैट्समैन की बात नहीं करें टेक्निकल, लेकिन so I would like to ask Zoha on yes particular question. He mentioned technique, but लेकिन अगर आप टेक्निक देखें तो फखर जमान की टेक्निक क्या है, रिजवान की टीम टेक्निक क्या है, ठीक है. तो ये डू यू थिंक उमर अभी भी उस दौर में फंसा हुआ है जहाँ पर टेक्निक को टैलेंट और रन गेटिंग से ज्यादा ओवर कंपेयर किया जाए? लेट मी फिनिश फर्स्ट एक उमर, ठीक सेकंड है. एक सेकंड एक एक ठीक सेकंड है उमर ये उस दौर में, एक सेकंड उमर ने लिटरली थ्रू आउट आपको पिछले पूरे वर्ल्ड कप में कहा कि यार अब थोड़ा मूव ऑन करने की जरूरत है. पाकिस्तान में अगर एक बंदा यूटिलिटी क्रिकेटर है, वो अच्छी बैटिंग कर रहा है अपनी स्टेज पे, तो हमें उसकी टेक्निक के अंदर नहीं जाना चाहिए. बट शादाब का केस एक एक्सेप्शनल केस है. आपका गुजारा, एक पासिंग मार्क्स तो होते हैं ना, जब मैं आपके पास मैं मैं पासिंग मार्क्स भी मैं नहीं मैं होंगे मैं मैं तो अपना फिर आप सवाल बहुत पूरा बुरे कर रहा हूँ. एक्सपोज होंगे.
मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। आई एम प्रीटी श्योर अगर सुहेल तनवीर भी स्टीवन स्मिथ भी पाकिस्तानी होता तो उमर फारूक चीमा कहते नहीं, उमर अकमल को खिला लो, उसकी टेक्निक थोड़ी ज्यादा साउंड है एज कम्पेयर टू स्टीवन स्मिथ। खैर, मुझे ये समझ नहीं आती इसकी डायलेमा। इस फवाद आलम को इतने सालों से सपोर्ट करता फिर भी हम टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। सो जोहम, आई थिंक मैंने उमर को काफी मेंशन कर दिया है। डू यू थिंक लाहौर की पिच थोड़ी टफ लग रही थी कंसिडरिंग द फर्स्ट मैच, क्योंकि मुल्तान भी 200 नहीं कर पाया विच इज द बेंचमार्क? Do you think that Shadab Khan would be there as the same player? And if he does manage to score heavy in Lahore as well, do you think that would be a big statement of intent from his behalf? And he might get promoted up the order because we do not see anyone taking Hafiz's place. So maybe like Malik comes in place of Hafiz, एक सालों को step ऊपर मिल जाए, and Shadab plays where Malik is playing right now. Do you think Pakistan could experiment with that, or would you say कि उमर की बात लॉजिकल है कि वो PSL में परफॉर्म करता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर वो नहीं कर पाता, which in the past has been the case? देखिए पहले तो काफी ज्यादा सवाल इकट्ठे हो गए। आई एम सॉरी। हमारे शो को कैंसिल कराएंगे। आपने शादाब खान की फैन फॉलोइंग देखी है? टिकटॉक पे उसके इतने फैन कैम्स बन रहे होते हैं, हमारा शो कैंसिल हो जाएगा अगर उसके फैन इधर आ गए हमारे पास। दूसरी बात, आई फील लाइक आई थिंक कराची का भी जो फर्स्ट मैच था ना उसमें स्कोर नहीं हुआ था। आई थिंक पिच जब थोड़ी यूज हो जाती है स्कोर तब होना शुरू होता है। बट yeah, I think even Rizwan was struggling कल, which I think आज देखेंगे कि आज फखर और सब, क्योंकि फखर also everyone says कि उसकी भी इतनी टेक्निक नहीं है। I think this PSL he's improved a lot. पहले even the World Cup he improved a lot. उससे पहले he used to, you know, after the first few overs वो restless होके बस खेलता था, he didn't care. But so I want to see how फखर performs, क्योंकि उसके ऊपर भी यही बात आती है कि उसकी टेक्निक नहीं है। If he performs and then Shadab performs, I think हमारे सवाल वैसे ही आंसर हो जाते हैं। And the other thing, I feel like we need to play at least T20s the way England does. आपके openers चलो फिर भी अगर करने हैं फिक्स कर ले, बट बाकी आपका बैटिंग ऑर्डर शुड नॉट इन माय ओपिनियन बी फिक्स्ड कि ये बंदा अभी आएगा, ये बंदा अभी आएगा। आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड डज दैट रियली वेल। दे सेंड इन देयर ओपनर्स व्हिच आर कंफर्म कि यही दो आएंगे। आई थिंक एलेक्स हेल्स एंड स्टर्लिंग अब चला गया, उसके अलावा आई थिंक आई डोंट नो हु इज गोना बी ओपनिंग नाउ, बट हुएवर दे नो कि ये ओपनर्स हैं। बाकी आगे कभी शादाब आ जाता है, कभी आसिफ अली आ जाता है। उस दिन आजम खान आ गया था, उस पहले दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू डू इन द लॉन्ग टर्म। आई थिंक हमारी बैटिंग अब तो, आई थिंक हमारा एक ये मसला लोगों को लग रहा है, आई डोंट थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ ओपनर्स, बट आई फील लाइक फखर भी वन डाउन खेल लेता है, शान भी वन डाउन खेल लेता है। We can even Babar I feel like can play one down. So I feel like we need to take this in a positive manner. I don't know, panic create ho gaya, we have too many openers. I don't think we need to panic about that. I think we need to play that to our strength. Play matlab itna fixed kyun rakhna hai? Even just let them see the match और जो condition है उसके लिहाज से बना लें बैटिंग ऑर्डर। I don't think we need to worry about this. And Shadab, I feel like I'm a very biased Shadab Khan fan since for Champions Trophy final. उसने जो एक रिव्यू लिया था युवराज सिंह के, मैं तब से उसकी फैन हूँ। तो आई एम वेरी बायस्ड, बट आई थिंक उसके ऊपर पिछले 2 साल बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, वैलिड। And frankly speaking, उसकी performance drop हुई थी. He used to bang it in short, बहुत wide कराता था, and everyone was reading him. I think the bowling coach change हुआ है ना, जो spinner हमारे head coach बने हैं, ठीक है, and that has been the revolution. वो फिर World Cup में ही शादाब was a different person altogether. ठीक है, so जिस तरह आपने बात की कि शादाब खान के एक उस spell से you have been a fan. Umar has been a fan of Wahab Riaz ever since that one spell against Watson, and उसकी वजह से Wahab Riaz के अगले 6 साल भी चल गए टीम में, ठीक है। And yeah, वैसे Wahab Riaz also performed at the big stages. I mean, इंडिया के खिलाफ मोहाली में भी 5 विकेटें उसने ली थी, ठीक है। So Mustafiz, I'm now coming towards you. The one player who has been consistently performing in domestic PSL and has been a phenomenon when it comes to being consistent, Shan Masood. ठीक है,
His technique is so solid right now. वो inside out पूरे विकेट को expose करके that requires guts, ठीक है, और वो उड़ा देता है, कुछ ना हो वो एक टांग पे बैठ के स्लॉग स्वीप मार देता है. कल भी अगर देखो रिजवान was struggling, he was clearly struggling, उसको समझ नहीं आती. शान मसूद was playing as if इसके घर की ग्राउंड है, ठीक है, and he got selected for the national team for test where and our mashallah our former cricketers are always ready to pick on people, and we got a message from Yunus Khan ke Shan Masood ko PSL ke performance ke upar rakha gaya, whereas in reality he has an average of 71 in domestic cricket this year. So coming back on Shan Masood, why is it कि अभी भी बेचारा T20 में overlook हुआ जा रहा है, whereas I remember last year भी जब वो drop हुआ था second half में आया था, he did play well, and this time he did play well as well. Do you see Shan Masood knocking at the doors of the selectors and saying कि मेरा भी stake है इस पाकिस्तान cricket team में, or do you think that our top order is so packed with quality openers कि उस बेचारे का मौका नहीं आएगा? Shan Masood is one of my favorite topics. शान मसूद का सीन ये था, आप लोगों को याद होगा जब उसको डेब्यू वगैरह मिला था, he had around a 70 or an 80 on his टेस्ट डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है, और लेकिन उस वक्त बिल्कुल जैसे उमर चीमा कहता है ना शायद आपको कि वो बैट्समैन नहीं है, उस वक्त अगर आप उसकी वो इनिंग्स देखते आप यही कहते कि ये बैट्समैन नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट टेस्ट लेवल बैट्समैन नहीं है. एंड मतलब एंड देन ही एंडेड अप, सॉरी आई लव यू उमर, दैट वाज नॉट इंटेंडेड, यू वर राइट, के हाँ जो भी है. खैर उसके बाद he was excluded from the squad completely, which I believe was the right call उस वक्त, ठीक है. उसके बाद he went on, अगर आप जेरेड किम्बर की पॉडकास्ट सुनेंगे शान मसूद के साथ, तो he went on पूरी एक जर्नी में निकले थे शान मसूद, जिसमें वो दुनिया जहान के बड़े कोचेस जो इंडिविजुअल प्लेयर कोचेस हैं उनके साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने बड़े बड़े एनालिस्ट के साथ काम किया, which included जेरेड किम्बर, to improve his game. और ये सिर्फ theoretically बेहतर नहीं किया, he worked hours and hours to improve his game. और फिर eventually when he started playing better domestic में, तो आपको याद होगा इंग्लैंड के टेस्ट हुए में उनको सेलेक्ट किया गया था जब हम इंग्लैंड गए थे, जहाँ पे he scored 150 once, और फिर उसके बाद इतना नहीं चले थे. लेकिन to be fair to him, उस पहले टेस्ट के बाद हमारा कोई भी बैट्समैन इतना नहीं चला था उस सीरीज. Frankly speaking, उसकी एक वीकनेस ही बहुत ऑब्वियस हो गई थी और वो हर दफा उसे तोड़ी जा रहा था. I understand that. तो उसके बाद ये था कि obviously we realized कि मेरे ख्याल से इमामुल हक वगैरह जो हैं they're better टेस्ट ओपनर्स, आबिद अली और इमामुल हक, which is fair. लेकिन I believe कि even in recent years इस PSL से पहले भी शान मसूद की जिस तरह डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस रही है इन T20s as well as in one-days, in domestic ODI one-days, मेरे ख्याल से he should always have been in the squad as a third opener, as a covering opener. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों नहीं किया गया कि why he was excluded completely. आपने शकील खान को ट्राई कर लिया, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, nothing was working. मेरे ख्याल से शान मसूद had to be there as a third opener. हमारा जो थर्ड टेस्ट में बैकअप ओपनर था ना, वो अब्दुल्ला शफीक होता था तकरीबन एक पूरे साल से. उससे पहले वो पट मेन ओपनर था एंड अब्दुल्ला वाज, उसको हम स्लिप फील्डर की वजह से रखते थे, उसको स्लिप पे कैच कर लेता था वो. ही वाज द फर्स्ट ओपनर, अब्दुल्ला शफीक बैकअप था. हाँ एग्जैक्टली. तो वो मैं कह रहा हूँ कि I don't understand why he wasn't in any of the squads as a covering opener. मैं नहीं कह रहा कि उसको स्टार्टिंग ओपनर रखना चाहिए था उस वक्त, but as a covering opener he should definitely have been there. Decent PSL में भी उसने परफॉर्म किया, वो नेशनल T20s में परफॉर्म करता है, वो OD वनडे कप्स में परफॉर्म करता है, और अब ये कह देना कि भाई PSL की वजह से उसको सेलेक्ट कर लिया, that is very unfair on him. मेरे ख्याल से उसको हर स्क्वाड में होना चाहिए, एज अ स्टार्टिंग नहीं भी सही, लेकिन एज अ कवर डेफिनेटली शान मसूद डिजर्व्स टू बी देयर. और उसके अलावा ही इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ही प्योर प्रोफेशनल है. उसकी जब जगह गई थी उसने एक लफ्ज नहीं बोला था, कुछ भी नहीं किया था, ही जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज गेम एंड ही हैज मेरे ख्याल से spoken with his performances वगैरह. और अभी भी अगर वो कहीं भी सिलेक्ट नहीं भी होगा तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ. I don't know if you guys remember, लेकिन 10 sports पे क्रिकेट का शो करता था and I loved watching him talk. उसकी analysis was so on point and he knows how to talk. So I personally love शान मसूद. मेरे छोटा भाई मुझाक उड़ाते तुम शान मसूद हो क्योंकि मैं भी लेफ्टी हूँ, वो भी लेफ्टी है,
ठीक है, लेकिन it eventually turned out to be a troll for me, ठीक है, but on that note, I think it's time to wrap up this episode, and I hope you all liked our episode. और ये थोड़ी cricket में ज़्यादा serious थी एक and सेकंड, मैं psychic. एक दो चीजें मैं तो ऐड कर दूं। I was going to give the floor एक to दो चीजें Umar ऐड कर after दूं I मैं concluded. मैं नहीं मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, ठीक है, मैं before let me respond to threats man। Umar, you have 3 minutes to respond. बोले। अच्छा जी, सबसे पहले तो आई थिंक शादाब खान इज अ वेरी गुड बॉलर, अच्छी बॉलिंग कर रहा है और अच्छा बॉलर रहा है थ्रू आउट। पिछले एक आधे साल से उसकी फॉर्म जरा थोड़ी सी नहीं थी, लेकिन उसने अच्छी कमबैक किया और एक अच्छा बॉलर है। बट एज ए बैट्समैन आई एम सॉरी, लाहौर में वो एक्सपोज होने लगे, हम सारे देखने लगे। नंबर 2, शान मसूद व्हेन ही इनिशियली गेम, जैसे मुस्तफीज ने मेंशन किया, आपको तब भी याद होगा मेंटली थोड़ा वीक था, लेकिन टेक्निकली शुरू से हम ये बात करते थे कि यार इस बंदे की टेक्निक एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और ये कैपिटलाइज करते। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के टूर के अंदर इसको अचानक शामिल कर लिया था कि शायद एक ऐसा बंदा है जिसकी टेक्निक क्योंकि अच्छी है तो इंग्लैंड में चल जाएगा। तो टेक्निकली हमेशा से अच्छा था, अब मेंटली उसने अपनी गेम स्ट्रॉन्ग की और T20s के अंदर वो आया है। और आपने कहा कि विल ही नॉक द सिलेक्टर्स डोर, ऑब्वियसली ही विल। और जब वो नॉक करेगा तो उससे एक अच्छा कम्पेटिटिव स्पिरिट भी डेवलप होता है। हमारे जो ओपनर्स हैं उनको इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं है, वो इतने बड़े लेवल के ओपनर्स हैं, बाबर कैप्टन है, रिजवान आपका प्लेयर ऑफ द ईयर है, तो किसी को इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे बड़े वो सिक्योर हैं, लेकिन एक अच्छी आपके पास ऑप्शन साथ आती है, तो ये दैट इज वेरी गुड फॉर क्रिकेट। और बाकी आप इसके अंदर जो as long as शादाब खान कीप्स परफॉर्मिंग, मैं कुछ कह नहीं सकता PSL के फ्यूचर के बारे में। मतलब पूरी दुनिया कहती है कि एक लीग है जो आपकी बॉलिंग की वजह से जानी जाती है और उसके अंदर आप 60 मीटर की बाउंड्री दे के इस तरह के बिल्कुल स्लॉगर्स को ले आएंगे जो 3 ब्लॉक करके उसके बाद कवर के ऊपर से कट करके छक्का मार देता है। मैं हैरान हूँ कि यार ये शॉट, हम जब छोटे होते थे तब ये शॉट्स जो है रिकी पॉन्टिंग भी नहीं मार पाता था, अब ये शॉट्स इतनी छोटी बाउंड्री होगी कि शादाब खान मार रहा है। तो थोड़ा सा हमें इसको क्रिकेट को अपनी पिचेस को भी बेहतर करना होगा और हमें अब जो भी क्रिकेट खेलनी है, ऑब्वियसली वी हैव टू विन आवर होम सीरीज वगैरह सारी, लेकिन जो भी क्रिकेट खेलनी है हमें माइंड में ये बात रखनी है कि वी हैव टू प्ले अ वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया लेटर दिस ईयर, और उसके हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। और प्लीज शादाब, आइंदा ये ना कहें कि शादाब खान नंबर 4 पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल लेगा, किसी को ऐसे हार्ट अटैक हो जाएगा। नंबर 4 पे क्रिकेट टीम में पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया में वो 5 रन नहीं बना पाएगा पूरे टूर्नामेंट। अच्छा, उमर इज सेइंग दैट क्योंकि उसको पता है उसको 2 पे खिलाएंगे ही नहीं तो वो 5 रन बना ही नहीं पाएगा। लेकिन on that note, I just want to tell कि ये उमर के अपने ओपिनियंस हैं and we should value him for it, ठीक है। बेशक बाद में अगर कोई हमें कमेंट्स में बैश करे तो मैं आपको बता दूं इसका अच्छा, पूरा और एक बात याद आ गई, वो यूनुस खान ने कहा जो कि शान मसूद को पता नहीं क्यों रख लिया। शान मसूद हैज एन एक्सीलेंट टेक्निक, और जैसे मुस्तफीज ने बिल्कुल सही कहा कि उसको ना भी रखते तो वो यही कहता कि चलो खैर है, आई विल परफॉर्म, मैं और खेलूंगा। यूनुस खान की तरह ये ना कहता मैं किधर जाऊं अपने आप को गोली मार लूं। तो वो भी एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस तरह के प्रोफेशनल्स की। उमर ने बिल्कुल सही बात की एंड लास्ट वाला कमेंट बहुत अच्छा था। On that note, I hope you enjoyed this episode and stay tuned for the next episode and keep on watching PSL, supporting कदाफी स्टेडियम भी जाएं और शादाब खान की परफॉर्मेंस पे गौर करके ना उमर को याद रखिएगा, अगर अच्छी भी रही और बुरी भी रही, बहुत कुछ है। So bye.